Assalamu alaikum and welcome again to course 563, and this is Operation Strategy, and I'm instructor Dr. Neil Salman, and we covered quite a lot so far. Right now we are focusing on supply chain, and giving you the recap of what we did in the last lecture was about green supply chains, and all the lecture was focused upon it, and it was quite a comprehensive. I gave you the history of sustainable development, how this concept evolved, why this concept is important, and how it is relating towards profitability. Then we talked about the sustainability triangle, in which we talked about environment, society, and your economics. Now, with reference to environment, we talked about what kind of ecosystem, integrating the whole ecosystem, then what is the carrying capacity, then talking about the biodiversity. With reference to society, our first point was your cultural identity, that why culture is important, why it's necessary, and how the social sustainability is important in terms of integration with your supply chains. And last but not the least, that was your economics, and in economics we talked about the growth, the concept of growth, the concept of development, the concept of sustainability, and how we make sure that at an individual level people are empowered, they are making their decisions, and ultimately how it all contributes towards the supply chain. So, ladies and gentlemen, one of the things we agreed, that supply chain is not just talking about greening. Supply chain is not just talking about having something like the green dustbins. No, green supply chain is much more beyond that. And what we defined was that it has to be an environmental thinking that starts from your sourcing, from production, from delivery to your end point consumers. At every point we have to bring the environmental thinking, and we have to see that how these different processes, how these different actions are going to affect the environment, and how we can mitigate those effects. So that was all about green supply chain. And another misperception about going green or becoming energy efficient or becoming environmental friendly is that increases the costs. It may be true for a very short run, but in the longer run what we have seen is that it actually increases the profitability of the company, it actually increases the brand name of the company, it actually increases the loyalty of the customers. So going green is not just letting people know that okay, we are environmental friendly, but it is actually increasing the tangible profitability of the company also. Today I'm going to talk about two major concepts. One is that, as we promised last time, that we will be talking about the AAA supply chain, and then there are certain cases, 3 Harvard Business School papers which I wanted to discuss with you, where we will see the actual implementation of the supply chain, what are the new concepts into it. Over here, let's start with the AAA supply chain. AAA supply chain was given by Hua Li, and he's basically at Harvard, and what they say is that the holy grails of supply chain management at the moment is, right now we are talking about that it needs to be highest speed and low cost. So we are talking about supply chains which is not just one company is involved. There are so many organizations which are involved into it, and every organization has something to do with speed. And there are high expectations. We don't want any bottlenecks in our supply chain, we don't want any blockages, and we want the product to be delivered within time, whatever we have promised the customer. Now, what he says is that in order to have sustainable competitive advantage, your supply chain needs 3 qualities. We have already discussed it in the green supply chain, but over here we are just talking about the AAA supply chain, which is a more rigorous concept, which is a complete new thing, even though it came in 2000s, 1990s. And that is basically the supply chain needs to be agile, it needs to be adaptable, and it needs to be aligned, and that actually gives you a sustainable competitive advantage in your supply chains. Now, when we are talking about agile actually means they respond quickly to
sudden changes in supply and demand. Fast. If anything is happening, or if anything has happened, or if anything is going to happen, my managers, my organization is so much active and it's so much quick in response that it responds to it, the changes in demand or supply. So when we are talking about the changes, now these changes sometimes are totally uncalled for. You don't know. But as we have been talking in the past, that our supply chains needs to be flexible so they can adapt to these changes. They need to be fast so that they can respond to them. So therefore, our supply chains, when we talk about that there needs to be agile, what we are looking into, that they have this capability to handle the external disruptions smoothly and cost efficiently. I have been talking about that Japan's triple tragedy. So if something happens in over there, what happens that we have this capacity that, okay, if once a vendor is in a trouble, then we can go to some other suppliers. If my one transport network has closed, we have alternative transports to reach, to make sure that our product reaches at that point of time. And then our supply chain, if God forbid, if they get disrupted, then they have to have that capacity to recover promptly from shocks such as natural disasters, epidemics, and computer viruses. So this is when we say that our supply chain needs to be agile. And in agility, what we are looking into, that we want that they can respond. What we have seen is in a number of cases that if there is any problem at the demand end, or if there is any problem in the supply, and the supply managers or the organizations take quite a long time in responding to it, and by that time the opportunity is gone or the threat is actually gone. But in the present scenario, given that it's not, the operations are not happening under one roof, there are other parties involved, there are so many other stakeholders, your production is not taking place in one place, it is happening not in one region, but it is happening in different parts of the world, and you need to stay active in terms of giving assurance to your stakeholders that your product will be reaching on time and your product will be assembled in time and with cost effectiveness. That gives you the sustainable competitive advantage. Now, after talking about the concept of agile, then we look into that what is adaptable. Adaptable is basically they evolve over time as economic progress, as political shifts, as demographic trends, and technological changes that reshape the market. Now, these are all external changes. They are not in my control. If the economy is progressing, that gives me an opportunity that I can invest or I can start up a new business. If my opportunities are good, if there is an economic boom, I can actually move my operations from one region to another region. So, if there are political shifts, I have to again develop the new political ties. If there is demographic changes, for example, your population composition is changing. If your major population is of youth, so your advertisements are not going to target the elderly people, they will be targeting the youth. So wherever the market share is, we just start moving our operations to that side. We start catering to our product to those kind of classes. So therefore, these changes are coming. You can't say that they are going to be stagnant. आपकी ये जो changes हैं ये होती रहेंगी, and a good supply chain is one which is adaptable to that because you can't resist it. You can't say कि जी अगर economy change हो रही है या economy अगर बुरी जा रही है तो मैंने उसके अंदर respond नहीं करना because economy इस वक्त बुरी जा रही है. No, you have to adapt to it. If the demographic changes are happening, तो अगर आप पहले product किसी और social class के लिए बना रहे हैं, now you have to change that product because अगर आप नहीं change होंगे, so you are going to be eliminated from the market. Therefore, it is pretty important कि जहाँ पे आप respond करते हैं, जहाँ पे आप agile हैं, वहाँ पे आपको adaptable भी होना पड़ेगा to these external forces which are always dynamic, which are always changing. Then comes, it has to be aligned. Aligned क्या होता है? They align interests of all participating firms in the supply chain with their own.
as each player maximizes its own interests, it optimizes the chain's performance as well. So align का मतलब होता है that we are all on the same page. Whatever my objectives are, how I am looking at the organization, बिल्कुल वैसे ही आपके दूसरे players भी हों, और जैसे जैसे every stakeholder in the supply chain or every stakeholder in that equation they are making profit, वैसे वैसे आपकी भी supply chain का profit increase हो रहा होता है. But if the interests are not common, if you are actually looking into the way कि जी this is my interest and you are just acting selfish, then that is not going to work out. So जो भी आपके है वो हम शुरू में भी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में करते रहे कि जब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, यू नीड टू कीप देम ऑन बोर्ड, यू नीड टू लेट देम नो व्हाट यू आर थिंकिंग. बिकॉज जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, जब हम सिक्स सिग्मा की बात कर रहे थे, जब हम लीन ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, वी सेड these operations will only work if your stakeholders know about it. जब हम कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात कहते तब भी हमने कहा था कि जी आपको अलाइन होना चाहिए. The interests needs to be aligned. What your vision, mission, goal is, that has to be aligned with the vision, mission, goal of your suppliers also. Because if everyone is on the straight, जिसे कहते हैं एक ही on the same frequency, then things are going to work, then your supply chains are going to be effective. But if there is some change of thought, there is some change of opinion, there is some change of interest, then supply chains are not going to be working that efficiently. So again जिसे कहते हैं reinforcing the three words. अब जो ट्रेंड है, जो ट्रिपल ए की बात करते हैं कि और सप्लाई चेन्स कैसी होनी चाहिए, नंबर 1 they needs to be agile, नंबर 2 they need to be adaptable, नंबर 3 they need to be aligned. ठीक है. Now comes agility. वो तो मैंने पहले सिर्फ आपको definitions बताई. अब ठीक है, agility लाएंगे कैसे? What are the different methods of bringing agility? Number 1, agility का जो main objective होता है, you have to respond to short term changes in demand and supply very quickly. चाहे वो changes short term हैं, यानी एक fad आया है, एकदम demand ज़्यादा हो गई है, तो you can't say कि जी let's wait, ठीक है demand को change कर देंगे या demand बाद में बेहतर हो जाएगी, यहाँ demand will automatically come back to normal, so why to make an effort? If you are of that thinking, then you are not successful in the business. जैसे ही आपका short term change आता है, you have to start responding to it. If you remember, there was पाकिस्तान के अंदर डेंगू फीवर आया. जब डेंगू फीवर आया, अब पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू इट. डिमांड फॉर मोर्टीन, वो जो थे मैट्स, मोर्टीन, मॉस्किटो स्प्रेज, ऑल दीज डिमांड स्टार्टेड इंक्रीजिंग. अब दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ आरबी, रैकेट बेनकीज़ा का प्रोडक्ट है. नाउ इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड, अगर वो कहता है कि जी ठीक है डेंगू फीवर आएगा चला जाएगा, उन्होंने एकदम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया. और मार्केट में इतनी ज़्यादा आपकी डिमांड थी कि इवन ये जो थे छोटे ब्रांड्स whom you might not have ever heard, वो भी मार्केट के अंदर आ गए and people start buying their products also. For the smaller brands it was a big opportunity. So that was a short term change कि डेंगू ने हमेशा पूरी उम्र नहीं रहना था, but your supply chain needs to respond to that change. आपको प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, आप उसको पूरा करें, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए. Now, what are the methods of improving your agility? Number 1, continuously provide supply chain partners with data on changes in supply and demand so that respond promptly. It's basically the sharing of information. आपने उनको properly provide करना रहना है. Otherwise अगर आप नहीं ये provide करेंगे, then there is going to be a bullwhip effect. Later on, अगर आप उसको देखेंगे, जब आप इन changes के data को जब आप share करते हैं, you will find that other parties, other stakeholders are going to respond to it. उसके बाद collaborate with suppliers and customers to redesign processes, components and products in a way that give you a head start over rivals. अगर आपने शुरू की स्लाइड देखी होगी तो we talked about sustainable competitive advantage. We don't want competitive advantage just in one season. We want it to be sustainable के हर दफ़ा, हर साल, हर मौके पे आप क्या हो, you are always on the top. In order to that, you need to include all your stakeholders and you have to tell them कि किस किस्म के changes आ रहे हैं. You have to inform them कि आप किस तरीके से प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर रहे हैं so that everyone is in the supply chain. Then आपको हमेशा प्रोडक्ट उस वक्त
बनाना चाहिए, उस वक्त डिलीवर करना चाहिए when it has been finished according to the demands and needs of the customer. Finished products only when you have accurate information on customer preferences. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल गारमेंट बताई थी इन द लास्ट लेक्चर्स, शायद ना भी बताई हो. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एडिडास, ठीक है. इट्स अ जॉगर कंपनी, इट्स अ स्नीकर्स कंपनी. एंड व्हाट इट डिड वाज कि उन्होंने ना एडिडास ने अपना एक नया पेयर निकाला अराउंड 2 years बैक, और उस पेयर की खसूसियत क्या थी कि उसके अंदर शैकल्स लगे हुए थे. शैकल्स का लगे होते हैं? चेन. It was well researched when it was launched in the American market. Product बिक गया. They call it as the racial product. Why? क्योंकि जब शैकल्स लगे थे, जो चेन्स उसके साथ लगे थे, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया कि जो जूते भागेंगे नहीं, और इट वाज अ वेरी येलो कलर की चेन्स लगी हुई हैं आपके जूतों के. उन अगर लोग अगर पेंटों के साथ जीन्स लगाए, वो चेन्स बांधते हैं, गले में चेन पहनते, तो वाई नॉट विद द शूज़. Sneakers. Now what happened that when these sneakers came in the market, the issue was that people started thinking, people means the black Americans or the Afro-Americans, they started thinking that it is basically to remind them about slavery, because chains are basically symbol of slavery. And आपका president बराक ओबामा, एफ्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके बाद आपकी कितनी ज़्यादा ब्लैक पॉपुलेशन थी, और उन्होंने इस वेल रिसर्च प्रोडक्ट को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया. नाउ सच थिंग्स हैपन. अगर आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है कस्टमर के ऊपर, डू नॉट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग एजिलिटी. रादर आपके सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट से एलिमिनेट हो जाएगा, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर प्रोडक्ट. सो देयरफॉर जब आप अपने प्रोडक्ट को फिनिश करते हैं, मेक श्योर दैट यू हैव द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर के आप जिनको वो दे रहे हैं. देन कीप अ स्मॉल इन्वेंट्री of inexpensive non-bulky product components to prevent manufacturing delay. हमेशा ये बात कहता है कि agility के अंदर जब भी आपने आना है, if you want to stay agile, if you want to meet these short-term changes in your demand and supply, always keep a backup. Backup इस वजह से आपने रखना है so that अगर कोई आपकी manufacturing के अंदर या कुछ external force आपकी इस वजह से कि आपकी supply नहीं आ सकती, so you always have a backup of such things. And these backups actually help you in terms of mitigating the delays जो कि आपकी organization में sometimes आ जाते हैं. Second आ जाता है आपकी adaptability. अब adaptability के अंदर what we are doing is we are basically looking on to कि जी आपने अपनी supply chain को क्या करना होता है, adjust करना होता है. आपने उसके अंदर ऐसे changes लेके आने होते हैं which match the चेंजेस इन द मार्केट. अब वो जो मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, उनको हमने क्या करना होता है, पहले ही डिटर्मिन करना होता है. अगर आपको उन चेंजेस का पता ही नहीं, तो एजिलिटी चाहे कितनी हो, यू डू नॉट अडेप्ट टू इट. वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वी नीड टू बी रेडी कि भी अगर ये चेंज आ जाता है तो आई एम रेडी टू चेंज माई प्रोडक्ट. अगर ये चेंज आ जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स के पास पैसे कम हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, तो एम आई रियली गोइंग टू सेल माई प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस? नो, यू वोंट. इफ़ यू हैव सीन, मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया है कि जब शुरू में था, यस अब फुल फ्लेज मील इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उन्होंने डील्स रखी हुई हैं. अगर अपनी मार्केट को और इंक्रीज़ करना है, वो मिडनाइट के बाद भी अपनी हाफ प्राइस डील्स कर देते हैं. उसके बाद ब्रेकफास्ट मेन्यू स्टार्ट कर दिया. सो मेनी थिंग्स फॉर एवरी क्लास. ये नहीं कह सकते कि मैकडॉनल्ड्स इज़ जस्ट फॉर द रिच पीपल. नो, इट इज़ नॉट. तो उन्होंने उस तरीके से कर लिया. इफ़ यू सी दीज शैम्पू कंपनीज, जो कंपनीज विच प्रोड्यूस FMCGs जो कि ये शैम्पू बनाती हैं, उन्होंने क्या किया ना, दे बेसिकली जो बड़ी बॉटल होती है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, अब इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं. नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड एन एक्सपेंसिव बिग बॉटल ऑफ शैम्पू. व्हाट दे हैव डन इज वो सैशे उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया. अब ये तभी पॉसिबल है इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ, इफ़ यू हैव दैट flexibility in your design, if you have that flexibility in your process, if you have flexibility in your policies, you can easily change it. कि जी नहीं, my product is not just for the rich, even though अब economic conditions ऐसी नहीं कि rich भी afford कर सके, so हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको छोटी पैकिंग में ले आया है. I am not just saying that my shampoos cannot be transported from one place to another because now it's available in sachets or it's available in small bottles. ठीक है, so आपने क्या करना होता है, आपने अपनी supply chain को इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है so that it is adaptable to the
changes, the external changes that is happening in your economy. अब इसको किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहला ये है कि you need to have a good वो जिसे कहते हैं analysis, और you need to track what are the changes coming in your developing countries, क्योंकि changes जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं और आपने इनको क्या करना होता है? आपने इनको track करना होता है, आपने इनको monitor करना होता है. उसके बाद use intermediaries to find reliable vendors to unfamiliar parts of the world. अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोडक्ट को किसी और रीजन में भेजना है एंड यू डोंट नो कि किसको मैं करूँ, कौन सा डिपेंडेबल है, तो हम क्या कहते हैं कि यूज़ इंटरमीडिएटरीज, ताकि वो अच्छे वेंडर ढूंढें जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जा सके और जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सेल की रिलायबिलिटी होती है. देन create flexibility by ensuring that different products use the same components and production process. कि different products हैं कि जो आपके different products हैं वो same components use कर रहे हो, यानी एक ही product आपका design ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर minimum वो differentiation हो, बल्कि replication आपकी हो सके, आपके products के जितने भी parts हैं वो हर एक के अंदर इस्तेमाल हो रहे हो. Then create different supply chains for different product lines. आप एक ही supply chain पे depend नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक को problem हुई तो आपकी सारी product lines उससे क्या हो जाती हैं? Separate हो जाती हैं. For example, I am the vendor of supply of burgers, hot pizza and ice cream. अब जो pizza की मेरी supply chain है वो फ़र्क है, जो मेरी ice cream की supply chain है वो फ़र्क है. Pizza मैं मोटरसाइकिल गाड़ी में भेज सकूँ, but ice cream मुझे हमेशा साथ कोई ठंडा freezer चाहिए जब मैंने भेजना है, क्योंकि I want to keep the temperature of my supply chain, or you can call it as the cold chain, same throughout the transport. So आपने क्या करना है कि always used create supply chains for different product lines to optimize capabilities for each. अब इसमें उसने example दिया है, for example, with highly customized low volume products use vendors to your main markets. For standard high volume products commission contract manufacturers in low cost countries. जब standardized हैं उनको आप massive production के अंदर करना है, उनको आप दूसरी countries में outsource कर सकते हैं, क्योंकि सारे एक ही process में एक ही design के हैं. लेकिन if it is a highly mass customized product जिसमें आपको बहुत सारी minor details का भी ख्याल रखना है, वो आप क्या करना है? अपने करीबी जो vendors who are close to you उनको आप depute कर सकते हैं if you are outsourcing it. Then the last one comes your alignment. Alignment is basically establish incentives for your supply chain partners to improve performance of the entire chain. आपने क्या करना है? हर जगह आपने incentives create करने हैं so that your supply chain people are happy, so your supply chain people know कि भी किस किस्म के incentives हैं, किस किस्म के उनको वो क्या मिलेंगे, motivation उसकी कोई ना कोई होनी चाहिए to stay in the supply chain. अब इसको किस तरह करना है? How we can do it? Number one is your transparency. जितनी ज़्यादा आपकी organization के अंदर transparency है या accountability है, that helps you. अब उसके अंदर क्या हो जाता है कि जी provide all partners with equal access to forecast, sales data and plans. You have to be transparent. You have to be accountable. You need to be sharing this information with your stakeholders so they know where you are and what you really want in future. Then clarify partners' roles and responsibility to avoid conflict. अगर आपने conflict को avoid करना है तो every partner, every stakeholder who is in the supply chain, they need to know their identified different role कि भी मैंने ये काम करना है और इसको इस तरीके से करना है. उसके बाद redefine partnership terms to share risks, costs and rewards for improving supply chain performance. हर एक पार्टनरशिप को में आपने देखना है कि एवरीवन हैज़ अ बेनिफिट, उसको रिवॉर्ड मिल रहा हो, उसकी रिस्क कम हो रही हो और उसकी कॉस्ट भी कम हो रही होगी. जस्ट डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट ऑल अदर पीपल हु आर एक्चुअली interlinked in your supply chain. Then align incentives so that players maximize overall chain performance while also maximizing their returns from partnership. You have to make your partners happy in a sense that they need to feel empowered, they need to feel be part of the organization. ठीक है, they need to feel कि जी अगर जो मेरी पेन है या जो मेरा गोल है वो उसको अपना गोल समझें. सो आपने हर पॉइंट पे ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इस तरीके से आपने उनको मोटिवेट करना है या इंसेंटिवाइज करना है सो दैट दे फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे डोंट जस्ट फील कि जी हम तो सिर्फ आते हैं माल देते हैं एंड दिस इज व्हाट इट इज. अब जनाब आते हैं आपके कुछ केस स्टडीज. Now in these case studies what we are talking about,
that we are doing different kinds of products. We are talking about different kinds of scenarios, और उसमें हम देखते हैं कि how supply chain has been affected. अब जो first आपका जो केस है, या फर्स्ट जो आपका केस है, दीज आर ऑल 3 हार्वर्ड के पेपर्स हैं, ये आपके कोर्स फाइल के अंदर होंगे. द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली द रैपिड फायर फुलफिलमेंट. अब रैपिड फायर फुलफिलमेंट में क्या है, एक कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड ज़ारा. ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. इट्स इन इस्लामाबाद में भी उसकी एक आउटलेट है, लाहौर में भी गालबन है, बट अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप में जाते हैं या यूएस जाते हैं, आपको ज़ारा का ब्रांड नेम हर जगह मिलेगा. There's a Zara man and Zara woman. अब इसकी स्टोरी बड़ी मज़े की है. ठीक है, मैन भी है यहाँ पे. Yes, Zara man is also there, Zara woman is also there. अब वो क्या करता है, Zara was basically स्टोरी ये स्टार्ट होती है, the company got this contract. और उन्होंने कहा जी ये बेसिकली was a production. इन्होंने कि वो प्रोडक्शन करना था, इनको टारगेट मिला. इन्होंने सारा Zara की कंपनी ने, the owner actually made all the clothes that was ordered to him. Once he made all of it and when he went to the person who actually ordered it, उस बंदे ने कहा जी मैं तो नहीं खरीद सकता, I don't have the money. Now what to do? And this person has invested all his life's money, सब कुछ उसने इन्वेस्ट कर चुका था in order to fulfill this order, which was a huge order. Now when this person rejected the order and उसने कहा जी मैं तो नहीं खरीद सकता and I'm not going to buy your material, अब this guy got very much worried. Now what he did was that he actually opened up a store और जितनी इसने चीज़ें बनाई थी वो उसमें उसने एग्जिबिट कर दी सेल के लिए. और फिर ऑटोमेटिकली द ब्रांड ज़ारा emerged और ज़ारा के नाम से उसने चीज़ें शुरू की. यानी his earlier he was just the manufacturer. उसके बाद फिर उसने इसका अपना ब्रांड बना लिया और इस चीज़ों को सेल आउट करना शुरू कर दिया. अब द ब्यूटी इज़ कि उसने इस तरीके से सेल आउट किया, इस तरीके से अपना ब्रांड नेम बनाया दैट एवरीवन स्टार्टेड लविंग. उसने जो ब्रांड लॉयल्टी अपनी क्रिएट की, दैट पीपल स्टार्टेड बाइंग देयर प्रोडक्ट. अब ये जो है मैनक्यू ऑर्टेगा, ये क्या कहता है, what he is now, these are his words of wisdom when he is talking about the supply chain. वो कहता है you need to have 5 fingers touching the factory and 5 fingers touching the customer. अब ये क्या हुआ, कहता जी this is how you actually make your supply chain. ये है चीज़ जो प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन ये है मेरा सप्लायर क्योंकि इससे मैंने रॉ मटीरियल है, ये है मेरा कस्टमर, इसको मैंने प्रोडक्ट देना है और इस तरीके से इनको मैंने रखना है so that I am managing the chains of supply. और यहाँ से लेना है, यहाँ से इसको देना है. कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू योर प्रोडक्ट अंटिल योर कस्टमर बाइज इट. वो कहते हैं जब तक ये वाला जो कस्टमर वाला आता है यहाँ से जब तक यहाँ तक नहीं आता, यू हैव टू कंट्रोल इट. अगर आपने जैसे ही प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलता है या जैसे ही आपका, तो अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया टिल इट हैज़ रीच द कस्टमर, then you are actually exploiting your supply chain. So what he says is control what happens to your product until the customer buys it. जब तक वो buy नहीं करता तब तक वो product क्या है, आपकी responsibility, and you have to take care of that. You have to maintain the quality of that product. Now Zara ने क्या किया है, Zara की chain क्या है, it is not just responsive chain. It is a super responsive chain जहाँ पे उसके 3 elements जो हम बात करते हैं, agility, adaptability and the third one was align. ठीक है, तो ये तीनों आपके जो A's हैं ये Zara की आपको supply chain में नज़र आएंगे. अब वो क्या करता है कि Zara ने एक और काम किया हुआ है कि हमने जो बात की थी लोकेशन को आप अपने करीब रखें. मोस्टली जो इसकी हाफ ऑफ जो प्रोडक्शन है वो इसने इन हाउस रखी हुई है. ज़ारा ब्रांड की सारी प्रोडक्शन जो मोस्ट है, हाफ ऑफ इट दैट इज़ बीइंग डन इन हाउस. उसके बाद फार फ्रॉम पुशिंग इट फैक्ट्री टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट, द कंपनी इंटेंशनली लीव्स एक्स्ट्रा स्पेस. अब क्या करता है कि जी जहाँ पे भी वो ज़ारा का जहाँ पे भी सेटअप है उसने क्या किया हुआ है, मैक्सिमम आउटपुट भी लेते हैं लेकिन अपनी हमेशा थोड़ी सी रिजर्व कैपेसिटी उन्हें रखी होती है.
Now what that reserve capacity is doing कि अगर तो वही एजिलिटी वाली बात है, अगर there are there changes in your demand and supply तो वो इस कैपेसिटी को यूज़ करते हुए एकदम डिमांड को पूरा कर सकें. They are not just operating optimally at the top production जो उनकी optimality है, but what they're doing is they are actually maintaining the some of the reserve capacity. उसके बाद ये जो कंपनी है ये सारे ऑल डिज़ाइन, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक फंक्शन सारे इसके अपने पास हैं. ठीक है, इसने आउटसोर्स ये वाले फंक्शंस को नहीं किया हुआ. अगर आपको नज़र आता है तो हम टीगो की जो और टेगो की जो बात थी कि जी आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल टिल इट रीचेस द एंड कस्टमर. तो उस पर अगर आपने नज़र रखनी है देन इट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट. उसके बाद आ जाता है देन हाउ इट होल्ड्स इट्स रिटेल स्टोर्स टू रिजिड टाइम टेबल फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड रिसीविंग स्टॉक. एक और उसके सप्लाई चेन की बड़ी वो खसूसियत है कि उन्होंने बड़ा रिजिड टाइम टेबल रखा हुआ है, यानी इफ़ इट्स वेंसडे इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. और इसके अंदर वो क्या करते हैं दैट एज दे आर टॉकिंग अबाउट द रिजिड टाइम स्केल दे जस्ट गेट द ऑर्डर्स ऑन दैट एंड दे रिसीव देम बैक. ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो टाइम लाइन्स हैं दे वर्क वेरी मच स्ट्रिक्टली ऑन इट. ये नहीं कि जी अच्छा आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा. नो, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. उसके बाद इट पुट प्राइस टैग्स ऑन आइटम्स बिफोर दे आर शिफ्ट रादर देन ईच. अब आपने देखा होगा स्टोर्स के अंदर क्या होता है कि जी ज़रा डिफरेंट स्टोर्स के अंदर लोग प्राइस टैग्स उस वक्त लगा रहे होते हैं. ना वो ज़ारा क्या कहता है, इसलिए हम इसको सुपर रिस्पॉन्सिव कहते हैं, बिफोर इट रीचेस द आउटलेट टू बी सोल्ड व्हाट इट डज इज कि वो खुद ही उसके ऊपर क्या कर देता है, प्राइस टैग्स लगा देता है. देन इट लीव्स लार्ज एरियाज एम्प्टी इन द इनएक्सपेंसिव रिटेल शॉप्स. अगर आप ज़ारा के स्टोर में गए हुए हैं तो रिमेंबर वन थिंग व्हाट यू विल सी, उन्होंने कहा होगा जी एक आपकी लाइन लगी हुई, बाकी देयर इज अ कंप्लीट ह्यूज स्पेस, यू कैन वॉक अराउंड. नाउ व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट कि जी ना ठीक है कितने कपड़े पड़े होंगे, 10,000 5,000 कपड़े पड़े हुए और उनके लिए आपने ह्यूज स्टोर आपने बनाया हुआ है. व्हाट दे डू इज वो कहते हैं जितनी आप एक बिहेवियरल चीज़ है कि जितनी आप छोटी शॉप में जाते हैं जहाँ पे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है वहाँ पे आपकी बाइंग क्या होती है, कम होती है. लेकिन ज़ारा की क्या है फिलॉसफी कि जी अपनी जो भी आप शॉप्स देखें, इंग्लैंड के अंदर मैंने देखा, यूएस के अंदर देखा कि जी शॉप का डिज़ाइन इस तरीके से इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर एंड व्हाट कस्टमर्स कैन डू दे कैन एक्चुअली वॉक अराउंड. क्योंकि कस्टमर ने जब अपनी बाइंग डिसीजन करनी होती है तो उसमें वो क्या करता है, ही हैज़ टू थिंक, और थिंकिंग के लिए ही नीड्स स्पेस. तो ज़ारा ने उसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए क्या किया हुआ है कि अपने जो आउटलेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रखी होती है, क्योंकि जितना आप मूव कर सकते हैं यू कैन एक्चुअली थिंक एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ डिसीजन. उसके बाद इट टॉलरेट्स इवन इनकरेजेस ओकेजनल स्टॉक आउट्स. अच्छा, नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और ये मैं वो कहता हूँ दीज आर द प्रैक्टिकल लेसन्स. अगर आप ज़ारा की स्टोरी देखें तो इट समटाइम्स फेवर योर स्टॉक आउट्स. एक शॉप पे इट्स अ वेरी कॉमन बिहेवियर, एक शॉप पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ, फूड शॉप है, और एक शॉप पे बिल्कुल ही लगा हुआ. विच वन विड यू प्रेफर? Psychologically we will go to the shop that has more rush because we feel कि भी लोग अगर सारे जा रहे हैं तो it must be a very good product. On the other side, if you are talking about a shop in which जहाँ पे stock out जल्दी हो जाता है, you will still wait and you will still ask कि भी second order आना है या दोबारा कब मैं order कर सकता हूँ, ये है. You won't go to an alternative. ज़ारा का यह है कि जब स्टॉक आउट हो जाता है इट इज़ बेसिकली लेटिंग पीपल नो कि भी अब ये प्रोडक्ट आपके ख़त्म हो गए. एक और ज़ारा ने कॉन्सेप्ट क्या किया हुआ है कि वंस देयर प्रोडक्ट फिनिशेस, उन्होंने एक माइंडसेट दिया हुआ है कस्टमर को कि अगर ये आपने डिज़ाइन की शर्ट या अगर आपने कोट पैंट यहाँ से ख़रीदना है और अगर ये बिक गया दोबारा पीस नहीं आएगा. सो दे मेक लिमिटेड वो डिज़ाइनर और उनको बल्क में नहीं बनाते, और जिस तरह वो अगर वो चला गया है तो इसका मतलब है नाउ द पर्सन हैज़ टू वेट, क्योंकि वो उस डिज़ाइन को रिपीट नहीं करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो वन हैज़ टू, इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन द कस्टमर्स माइंड कि जी अगर तो हम वो प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर इफ़ आई एम स्टिल इन द डिसीजन मोड कि वेदर आई शुड बाय द प्रोडक्ट और आई शुड नॉट,
देन जैसे कि कस्टमर को ये होता है कि भाई अगर तो ये स्टॉक आउट में चला गया, अगर ये आज नहीं है तो कल अगर बिक गया, then it is not going to come back. So इस वजह से उसको अच्छा लगता है कि जी जब कभी occasional stock outs हो तो people would say कि नहीं यार, let's go to Zara because their products are really good. So that is what Zara has done to actually वो जैसे कहते हैं ना push their image or to actually have created the image in the customer कि जी मेरा अगर product stock out हो गया तो इसका मतलब है I am in demand and the next design is not going to come जो कि एकदम बिक गया है. So इससे क्या हो जाता है, एक तो उसने areas बड़ा रखे हुए हैं consumer ताकि decide कर सके and once he decides then he actually buys the product. ठीक है ना, वही वाला कि wait, control everything until the product is actually being sold. ठीक है. Then comes your self-reinforcing system built on three principles. As we said, कि जी इसकी super responsive supply chain है. How is it working? Number one, close the communication loop. वो कहता है जी communication को अगर आप open रखेंगे, if you keep the communication loop, a loop होता है ना कि बंद हो जाता है, अगर आपने communication को open रखा हुआ है then it is not going to be a self-reinforcing system. So इसलिए जो भी आपका है अपने loop को क्या करें, close करें. Then stick on to a rhythm across the entire chain. आपके ये ना हो कि कहीं पे कोई चीज़ fast है, कहीं पे slow है, कहीं पे slow है तो कहीं पे fast. So you should always be sticking on to a rhythm throughout the chain. Then leverage your capital assets to increase supply chain flexibility. आपने capital assets को use करें so that there is more flexibility in your supply chain. अब हम क्या बात करते हैं when you say close the loop. Close the loop का मतलब होता है transfer both hard data and anecdotal information quickly and easily from shoppers to designers and production staff. कि जो आपको information मिली है वो आपकी शॉप पे नहीं रहनी चाहिए. उसने क्यों यहाँ जो आपका जो मैनेजर बैठा हुआ है वहाँ पे उसको तो नहीं इसकी ज़रूरत, मार्केटिंग वालों को नहीं इसकी ज़रूरत. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड वेरी क्विकली. किसको? टू द प्रोडक्शन स्टाफ. उसके बाद ट्रैक मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम एवरी स्टेप ऑफ द वे. ठीक है, यू नीड टू कीप ऑन ट्रैक विद योर वो जैसे कहते हैं जहाँ जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट या मटेरियल आ या जा रहा है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेंट्री एंड it should be displayed in the store. Then the goal is to close the information loop between the end users and the upstream operations of design, procurement, production and distribution as quickly and directly possible. Now the last one is the regular creation and rapid replenishment of small batches of new goods. कि आप क्या करें, आप बैच प्रोडक्शन करें. एक होती है ना वो जो फास्ट प्रोडक्शन होती है, एक लाइन प्रोडक्शन होती है, एक होती है बैच प्रोडक्शन. व्हाट इट प्रपोजेस इज कि व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गो फॉर बैच प्रोडक्शन. देन स्टिक ऑन टू रिदम अक्रॉस द एंटायर चेन. व्हाट डज दैट मीन? ज़ारा के ऊपर उसकी जो ज़बरदस्त चीज़ है दैट इज बेसिकली योर टाइमिंग एंड योर सिंक्रोनिसिटी at the paramounts in any training. उसके बाद जब भी आप सप्लाई चेन के रिदम की बात करते हैं तो स्टिक ऑन टू दैट कि जी आपको टाइम के बारे में एक्यूरेट होना चाहिए. देन कंपनी indulges in an approach that can be best to be characterized penny foolish pound wise. कंपनी की ये है philosophy. Then it spends money on anything that helps to increase or enforce speed and responsiveness of the chain as a whole. And as I said, it has to be empowered. So the Zara company has spent a large amount of money where it is actually investing in your speed and responsiveness. Then last one, so leverage your capital assets to increase supply chain flexibility. अब इसमें क्या है, Zara has made major capital investments in production and distribution facilities and uses them to increase the supply chain's responsiveness to new and fluctuating demand. ये उसने बनाया हुआ, अपना mandate बनाया हुआ. Then it produces complicated products in-house, यानी जो आपके मुश्किल डिज़ाइन क्लोथ्स हैं वो आपके in-house बनते हैं, और जो आपके standardized हैं they go back to वो जो outsource उसको कर दिया जाता है standardized वालों को. अब
इस सारी जो केस है विच यू माइट हैव रेड, एंड इफ यू हैवंट रेड जस्ट ओपन योर कोर्स पैक, उसके अंदर ये वाला केस दिया हुआ है. देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स. नंबर 1 कि टच द फैक्ट्रीज एंड कस्टमर्स विद 2 hands. फैक्ट्रीज एंड कस्टमर्स विद 2 hands. डू एवरीथिंग पॉसिबल टू लेट वन हैंड हेल्प अनदर. एक दूसरे की आपने मदद करनी है. एंड वॉट एवर यू डू, डोंट टेक योर आइज ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल इट्स सॉल्व्ड. यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, आवर मेन ऑब्जेक्टिव फॉर कमिंग इज फॉर टेलिंग दिस इज दैट यू आर देयर टू sell it, and until it's not sold, what you do is that you actually hold up and you actually वो जैसे कहते हैं never leave the product. You keep an eye on it so that वो जल्दी से बिक जाए. Then comes second paper, that is basically your deeper supplier relationships, और ये जेफरी लाइकर और थॉमस चोए का है पेपर. ठीक है. What they did was army partnering hierarchy. Now this is from the supplier perspective. What they say is that an army marches on its stomach. Very common. कि अगर आप किसी भी बिजनेस को देखना चाहते हैं, ठीक है, आप और अगर कोई आपको आउटसोर्स कोई चीज़ आपको कर रहा है, तो ही और शी विल मेक श्योर कि वो क्वालिटी की हो, उसके अंदर कोई ऐसे जितने इश्यूज ना हो. एंड एमेच्योर स्टॉक स्ट्रैटेजी एंड प्रोफेशनल स्टॉक लॉजिस्टिक्स. वो क्या कहता है कि जी, एंड एमेच्योर्स क्या कहते हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, किस किसी हमें स्ट्रैटेजीज करनी है. लेकिन प्रोफेशनल्स क्या बात करते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स. Now what they say is कि given supplier is such an important person, अगर supplier नहीं हो देगा तो आप उस product को कब बनाओगे, किस तरह बनाओगे. What they are looking into is that you have to understand what is your supplier works. Number 1, learn about suppliers business. आपको अपने suppliers के businesses का पता होना चाहिए. You need to actually वो जैसे कहते हैं ना, keep an eye or have something common in which the other party who is actually doing business, they are good to you. So you have to learn about suppliers businesses. Number 2, then you have to make sure that the people who are sitting, they are all वो जैसे कहते हैं comfortable in their zones. People who are there, they need to be comfortable in their zones in terms of that they know what they have to do. If your stakeholders are there, ठीक है ना, or stakeholders are in the network, but they don't know what you are expecting, they don't know what they have to supply. Obviously supply is not just about the goods, it is also about the service वो जो suppliers आपको provide कर रहे हैं. So most of the times ये होता है that as a manager we don't know, I am a supply chain manager, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जो कोका आया है या जो आपका कोई रॉ मटेरियल आया है वो आया है कैसे आया है, व्हाट आर द फैसिलिटीज इन योर वो जैसे कहते हैं इन योर लोकेशन या इन योर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये स्मूथली ये डिलीवर कर रहे हैं. सो 2 किस्म के मैनेजर्स होते हैं. वन मैनेजर इज नोन एज द हेलीकॉप्टर मैनेजर एंड अनदर वन इज नोन एज द एटॉमिक मैनेजर. जब हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, स्टीव जॉब्स वाज बेसिकली एटॉमिक मैनेजर. एटॉमिक मैनेजर वो होता है जो सारी टीयर्स को छोड़ के वो खुद, ही इज द फर्स्ट मैन जो एक्चुअली देख रहा होता है हाउ द अफेयर्स आर वर्किंग, हाउ थिंग्स आर वर्किंग. सो एक जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है दैट यू पीपल नीड टू गो, यू पीपल नीड टू सी कि जी हाउ योर सप्लायर्स आर वर्किंग, वो कहाँ से मटीरियल ले रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन कैसी है. Then respect your supplier's capabilities. Whatever your supplier capability is, you have to understand it. You need to see कि भी ये किस capacity का है, कितने goods आपको या raw material अगर आपको emergency में चाहिए हो, does he have that capacity to fulfill your order or not. उसके बाद commit to co-prosperity. Again, it's not a selfish concept, it's just I who should be benefiting from it. This is basically कि जनाब आपका वो जो को प्रॉस्पेरिटी है वो दोनों प्लेयर्स को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी
फ़ायदा हो। Then turn supplier rivalry into opportunity. How you do that? Number one, source each component from 2 or 3 vendors. Then create compatible production philosophies and systems. Then set up the joint ventures with the existing market suppliers to transfer knowledge and maintain control. तो यानी अगर आप देखते हैं कि जी मेरा सप्लायर कैसा है या मेरा सप्लायर का कंपटीशन किसी दूसरे के सप्लायर के साथ है, तो try to maintain these lines, try to maintain these activities which is being written. कि number one, source each component from 2 or 3 vendors. उसके बाद जब आप एक वेंडर को रखेंगे और अगर कोई एक्सटर्नल शॉक आ जाता है, then you will facing problem कि आपकी प्रोडक्शन पूरी रुक जाएगी. So इसलिए 2 से 3 आपने वेंडर्स रखने होते हैं. Then create compatible price production philosophies and systems. ये भी आपने खुद ही आपने जनरेट करना है. और लास्ट में क्या आ जाता है कि आपने जॉइंट वेंचर को देखना है. Then comes your supervise your suppliers. Supervise your suppliers basically means that send monthly supply cards to core suppliers. उसके बाद provide immediate and constant feedback, get senior management involved in solving problems. एक ये भी है कि जी आप खुद ना कुछ करें बल्कि आपके कहते हैं that it has to be involved your senior management. Get senior management involved in solving problems. उसके बाद जो आपका फीडबैक आता है वो आपने इमीडिएटली देना है. और जो आपने मंथली कार्ड्स हैं वो भी ऑब्वियसली अपने कोर सप्लायर्स को आप प्रोवाइड करें. फिर आप कहते हैं कि आपके जो सप्लायर्स हैं गिवन दैट दे आर एक्चुअली गिविंग यू द रॉ मटेरियल, so what we have to see is that it's basically that we have to look at the capabilities of your suppliers and you need to develop the technical capabilities, build suppliers in terms of problem solving. उसके बाद develop a common lexicon, and last one is hone core suppliers innovation capabilities. You are actually developing your suppliers, you are actually telling them how to do it, you are telling them what to do. So that's where the objective of alignment comes over here. Then share information intensively. ठीक है, हमने ये बात पहली स्लाइड में भी की थी और ज़ारा वाले में भी की थी, ग्रीन सप्लाई चेन में भी की थी कि you need to share your information. ठीक है, अब share your information में क्या होता है कि जब भी आपने कोई टाइम देना है किसी को, जी द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9 o'clock, इट मीन्स 9 o'clock. उसके बाद जिस जगह में है वो वेन्यूज भी कोशिश करें चेंज ना हो. देन यूज रिजिड फॉर्मेट्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन डजंट मीन कि जी आपने वो जिसे कहते हैं यू हैव टू शेयर एवरीथिंग. इट्स नॉट व्हाट यू शेयर, इट्स बेसिकली हाउ यू शेयर. देन insist on accurate data collection. Some companies rely on the secondary data and some companies rely on the primary data. So if you are relying on the primary data, then that should be an accurate data. तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, इंतहाई ख़ास monitoring and evaluation frameworks उस पर रख रहे हैं. उसके बाद share the information in a structured manner. Structured manner में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपने डिफरेंट शेयर होल्डर्स को वो चीज़ें देनी है. ठीक है, सो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हो, एक स्ट्रक्चर्ड फंक्शन में हो जहाँ पे इट इज़ ईजी टू रीड. देन कंडक्ट जॉइंट इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़. अब जॉइंट इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी हैं कि जी आपकी कौन सी एक्सचेंज रेट प्रैक्टिसेस हैं विद सप्लायर. देन initiate Kaizen projects at suppliers facilities. और उसके बाद set up supplier study groups. So these are all ways by which we can say conduct joint improvement activities. Then the last paper comes we are in this together. ठीक है, ये है डगलस लैम्बर्ट का और माइकल केनेमायर का है. इसमें क्या है, बेसिकली हमने पीछे बात किया कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, डोंट जस्ट कीप देम एज योर स्टेक होल्डर्स, दे आर बेसिकली योर पार्टनर्स. अब उस पार्टनरशिप को कैसे हमने करना है, उस पार्टनरशिप मॉडल को हम करते हैं. अगर आप इसके अंदर देखें 4 चीज़ें हैं. नंबर 1 इज़ योर ड्राइवर्स, नंबर 2 इज़ योर फैसिलिटेटर्स, नंबर 3 इज़ योर कंपोनेंट्स एंड नंबर 4 इज़ योर आउटकम्स. अब ड्राइवर्स क्या होते हैं, दीज आर कंपेलिंग रीजंस टू पार्टनर. यानी आप अपने पार्टनर को वो चीज़ें बताते हैं या वो इंसेंटिव्स देते हैं इन विच ही और शी नीड्स टू फील कि जी इनका क्या अंदर स्टेक है. दे आर कंपेल्ड टू वो जिसे कहते हैं ना वर्क विद यू.
Then comes your facilitators. Facilitators क्या करते हैं? They are supportive environmental factors that enhance your partnership growth. For example, they can be exogenous, they can be endogenous, they can be people, they can be hardcore structures. So these are your facilitators. उसके बाद आप क्या करते हो? जब आपके ड्राइवर्स होते हैं, जो आपके फैसिलिटेटर्स होते हैं, अब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, डिसीजंस टू क्रिएट और एडजस्ट पार्टनरशिप. रिमेंबर, पार्टनरशिप क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं. अब उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं? जॉइंट एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट बिल्ड एंड सस्टेन दिस पार्टनरशिप. और लास्ट में आपका क्या आ जाता है? आउटकम. और व्हाट डज आउटकम डज? दैट द एक्सटेंट टू विच परफॉर्मेंस मीट्स द एक्सपेक्टेशंस. कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस, अगर उस पर आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए, वो आपकी ठीक हो जाए. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द मॉडल्स इन पार्टनरशिप एंड दिस इज वन ऑफ देम. कि एक साइड पे आपका आ जाता है ड्राइवर, एक साइड पे आपका आ जाता है फैसिलिटेटर, एक साइड पे आपकी आ जाती हैं कंपोनेंट्स, और बाद में आपके क्या आ जाते हैं? आउटकम्स आ जाते हैं. ठीक है. नाउ ये है मैट्रिक्स, बड़ी मजे की. और दीज आर डिफरेंट रेंजेस इन्होंने दी हुई हैं on the vertical axis or on the horizontal axis. 8 to 11, 12 to 15, 16 to 25. Ease of coordination. अगर आप vertical axis पे देखें तो वो दिया हुआ ease of coordination and this is the company's desire for partnership. अब इसके अंदर क्या करता है? अगर आपकी ease of coordination that is from 8 to 11, so this is the best type of partnership because this is known as arm's length. We partnership type 1 in which coordination is limited. अगर आप पहली पार्टनरशिप देखते हैं तो उसमें क्या होगी? आपकी कोऑर्डिनेशन लिमिटेड होगी. सेकंड में आ जाए बेस्ट पार्टनरशिप टाइप 2 in which activities of multiple divisions are integrated. अब आप सप्लाई चेन आपकी एक्सपैंड कर रही है. ठीक है. कंपनीज डिजायर फॉर पार्टनरशिप. और दूसरी साइड पे अगर आप देखें ईज ऑफ कोऑर्डिनेशन. थर्ड पार्ट क्या आ जाता है? दैट इज 16 to 24 मैट्रिक्स. उसके अंदर वो क्या कहता है? बेस्ट पार्टनरशिप टाइप 3 इन विच ईच कंपनी व्यूज द अदर एज एन एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ. यानी उसी से वो कंपनी निकली है. अब अगर आप इनको वर्टिकली नहीं, अगर आप इसको डायगनली अगर आप देखें तो बेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप 8 से 11 पॉइंट्स में आता है. 8 to 11 एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द आर्म्स लेंथ. पार्टनरशिप टाइप 2, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? दैट यू आर एक्चुअली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट डिवीजन, मल्टीपल डिविजन्स को हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं. और लास्ट वाले में क्या कहते हैं कि जी आप क्या करो? इन विच कंपनी व्यूज द अदर एज एन एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ. कोलैबोरेशन हो रही है. देन द पेपर कम्स दैट इज बेसिकली आर यू द वीकेस्ट लिंक इन योर कंपनीज सप्लाई चेन. हम किस तरह ये फाइंड आउट करते हैं? रॉबर्ट जॉन और पॉल डिटमैन का ये पेपर था. नाउ आ जाता है जब हमने एथिक्स की बात की तो ये सप्लाई चेन चला कौन रहा है? दैट इज बेसिकली द पीपल. ठीक है. अब पीपल को अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं पिक द राइट लीडर्स. जिसने सप्लाई चेन को चलाना है, जिसने सप्लाई चेन को मेंटेन करना है. अब वो क्या कहता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कांट बी कॉम्पिटेंटली मैनेज्ड बाय द uninitiated. Yeah, there needs to be drive, there needs to be passion if you want to pick up the right leader. Then ensure senior supply chain executives have a background in supply chain management through formal education, significant experience or both. अब आपको क्या चाहिए? सेकंड के जी आपके जो सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं वो कौन से एक्सपर्ट्स होने चाहिए? there needs to be gurus of their area. अब इसमें क्या होगा? that once they are here, once they are actually managing the supply chain, it actually becomes agile, adaptable and aligned. And extend this best and the brightest principle down to entry level hiring. और यही जो आप principle use कर रहे हैं कि you're looking for the best people, इसको आपने क्या करना है? last level तक ले आना है. Initiate benchmarking. Benchmarking क्या होती है? These are the standards and select the metrics. What you are doing? Conduct external best practice benchmarking on certain key aspects of supply chain performance such as inventory turns, availability of schools and SKU systems cost. Set goals for metrics based on the benchmarking.
उसके बाद define the matrix in ways that generate useful information. For example, good availability means orders delivered to customers on टाइम. सो हर वर्ड की आपकी डिफरेंट वाइब है. सो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना एक बेंचमार्क डिफाइन करना है और उसके बाद फिर अपनी मैट्रिक्स को देखनी. अब हमने एक और भी बात की थी दैट यू हैव टू सेट इन द इंसेंटिव. इंसेंटिव्स में हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश रिवॉर्ड्स एनकरेजिंग सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज टू सपोर्ट योर सप्लाई चेन गोल्स. उसके बाद हमने ये भी बात की कि जी आपने अगर अपने आप को सप्लाई चेन में अडेप्टेबल रखना है, अजाइल रखना है, तो आपको क्या चाहिए, keep up with the technology and trends. You are not supposed to be new Luddite. Luddites वो थे जो anti-technologists थे. You have to basically follow the path of different technologies आप use कर सकते हैं. Now, stay current with supply chain technology advances, कि जो आपकी supply chain में usually जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, एज अ लीडर यू नीड टू स्टे अब्रेस्ट विद इट. रिमेंबर कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी चेंज होती रहती है. फॉर एग्जांपल RFID कभी आ जाती है, कभी आपकी वो वर्चुअल सप्लाई चेंज आ जाती है, कभी नैनो जीनोम्स आ जाते हैं. सो देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स जो कि आपकी सप्लाई चेन में चेंज हो रहे होते हैं. देन यू हैव टू बी अपडेटेड विद दैट. वही वाली बात कि अगर तो आप अपने ट्रेंड्स को देखते हैं कि ट्रेंड्स आपके चेंज हो रहे हैं और यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू इट, तो समवन एल्स विल टेक एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट. सो देयरफॉर आपको जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोडक्शन प्लानिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वेयर हाउसिंग है, ये सारे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एफिशिएंट टूल्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी सप्लाई चेन के में. सो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. उसके बाद आपके कुछ प्रोसेस टूल्स होते हैं. प्रोसेस टूल्स हमने अगेन काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़े थे, लाइक योर 6 सिग्मा, लाइक लीन मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या BPRs. ये क्या होते हैं, ये भी सारे, हाँ, ये अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सारी सप्लाई चेन को करनी है. डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि जी आपने सिर्फ एक डिवीजन पे किया तो आपकी वो जैसे कहते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. Then understand how your firm is currently using technologies and ask challenging questions before adopting to new tools. Whenever we are going for such changes, obviously इस change को resist किया जाता है because people are comfortable in their tech zones. But you have to bring that change and you have to ask challenging questions before adopting to these new tools. Then आपका आ जाता है factor supply chain management into business plans. एक बड़ी वो एंटरप्रेन्योरशिप का जब हम कोर्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम एक चीज़ लेके आते हैं जी, बिजनेस प्लान्स. बिजनेस प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस प्लान्स आर एक्चुअली द रिटन डॉक्यूमेंट. इट इज़ एक्चुअली द लॉन्चिंग पैड ऑफ एनी बिजनेस वेंचर विच यू वांट टू क्रिएट. और हमेशा कहते हैं कि बिजनेस प्लान आप लेके आए. नाउ what the point is that business plans का जो document होता है, we have to do it, that we have to align it, we have to bring supply chain into it, and you have to make sure कि जो supply chain के जो components हैं, may it be operations, sales, marketing, planning, contract negotiations, in every point आपकी ये जो supply chain के अंदर include होने चाहिए. और उसके बाद if you are finding some inconsistencies, then what you do is that you make a part of your strategic aims. उसके बाद आपने क्या करना है, resist the tyranny of short-term thinking. You have to be sustainable in your thinking. It can't be long-term because changes जब आ रहे होते हैं they are short-term. बाद में जैसे जैसे वो लॉन्ग रन हो जाता है फिर तो वो ट्रेंड्स बन जाते हैं ना. फिर तो अकेले आपकी वो नहीं है, बहादुरी नहीं है that you are actually countering those changes. वो तो फिर all other organizations are actually working to it. लेकिन the first advantage is that once ever these changes are coming and even if they are short term, you are responding to it. ठीक है? So resist to the tyranny of short term thinking. Discourage of deep discounts at quarters end to make the numbers. वो कहते हैं जी आप ये जो बड़े बड़े discounts दे देते हैं ये मत करें. Then discounts train your supply chain partners to delay buying until end of each quarter. जितना आप इसको discounts देंगे उतनी ज़्यादा आपकी वो supply chain में जो आपके sellers होते हैं या जो आपके partners हैं, they will also start delaying it till the last quarter क्योंकि it will be sold cheap because obviously when the prices are reduced your revenues increases.
That triggers low sales in the first 2 months of the next quarter, which prompts more discounts. तो अगर अभी आप देखें अलमिया in Pakistan, what we are doing is that we are actually talking about major discounts. हर जगह 50%, 40%, 50%, 40%. अगर आपको ये पता है कि जी सेल लग जाएगी, will you buy now or will you wait for the discount? अब अगर 90% लोगों ने अगर सेल लगाई हुई, आपने सेल नहीं लगाई, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू सी. पीपल वुड से कि जी आपने सेल नहीं लगाई हुई. अब समटाइम्स सेल्स भी क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं. यू हैव नेवर बीन टू दैट शॉप जहाँ पर लिखा होता है कि जी पहले 5000 का था, अब हमने इसको 3000. ये भी तो हो सकता है वो पहले भी 5000 का था, अब भी 5000 का है. बेसिकली अब उसने क्या कर दिया, एक ऊपर नया नंबर ऐड कर दिया कि ये पहले 10,000 का था, अब मैं इसको 5,000 में दे रहा हूँ. डिस्काउंट सुनते ही यू जस्ट गेट प्रॉम्प्टेड एंड यू डू द बाइंग डिसीजन. लेकिन जितने आप ज़्यादा डिस्काउंट्स देते हैं उतनी ज़्यादा इट अफेक्ट्स योर सप्लाई चेन. Then the cost to you overtime during heavy buying, wasted labor during slow months. जब आप डिमांड आपकी एकदम इंक्रीज होगी, एजिलिटी आप दिखा रहे हैं, आपने डिस्काउंट दिया, अब आपको क्या करना है, अपने लेबर से ज़्यादा प्रोडक्शन करवानी है जो कि पहले बिल्कुल फारिग बैठी हुई थी. एंड हाई इन्वेंट्री कॉस्ट, और आपकी ऑब्वियसली इन्वेंट्री कॉस्ट भी क्या हो जाती हैं, हायर हो जाती हैं. सो दीज आर सर्टन फैक्टर्स विच यू हैव टू undergo, which you have to see कि जी जब हम सप्लाई चेन को बना रहे हैं, किस किस्म के लोग हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, and how you are actually making your supply chain. Now ladies and gentlemen, just let me just give you a recap of what we have done so far. हमने डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द ट्रिपल ए. उसके बाद फिर हमने डिफरेंट केसेस पढ़े. डिफरेंट केसेस के अंदर पहले हमने ज़ारा का किया था, दैट हाउ दे आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन, दे आर सुपर रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन. देन वी टॉक्ड अबाउट अनदर एस्पेक्ट कि जी आपकी जो सप्लाई चेन के अंदर होती है वो पार्टनरशिप्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फिर थर्ड हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप्स आपने बनानी कैसे हैं, विच फैक्टर्स यू हैव टू incorporate in order to have a good supply chain. Last में भी हम पढ़ रहे थे this one, are you the weakest link in your company supply chain, कि हम उस लिंक को कैसे improve कर सकते हैं. I'll just go one more time. You always pick up the right leaders, हमेशा benchmarks आप define करते हैं. उसके बाद देन यू हैव टू सेट द इंसेंटिव्स कि जी आपने रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं कि जी आपके पास कौन सा सप्लायर है और आपने उसको किस तरीके का रिवॉर्ड देना है. उसके बाद यू ऑलवेज मूव अप विद योर टेक्नोलॉजी कि जी कौन कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी some other will use it and they will take the opportunity. And you also needs to make part of these supply chains as part of your business plans, because if you don't make them as part of your business plans, it will become a separate thing. But remember, supply chain is not something separate. Supply chain is actually integrating the whole business activities from your ultimate supplier or your raw material till your ultimate customer. तो उन सारों को वो बेचारा क्या कर रहा था, वो तो इंटीग्रेट कर रहा होता है. अगर यही चीज़ आपके बिजनेस प्लान के अंदर आती है तो शुरू से ही आपकी सप्लाई चेन उसके अंदर इनक्रोस्ड होती है. और लास्ट में होता है कि जी जो आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग आप लेके आ रहे होते हैं कि लेट्स गो फॉर डिस्काउंट्स, लेट्स गो फॉर अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए आपने ये शॉर्ट टर्म जो डिसीजंस ले रहे होते हैं, ये समटाइम्स आपको हैवी प्राइस पे करते होते हैं. सो मेक इट something which is always sustainable, make it something which is always shock proof, make it something which is flexible, make it something which actually prompts the customer कि नहीं अगर इस पे डिस्काउंट नहीं है even then I will prefer buying it, क्योंकि वो अपने कस्टमर लॉयल्टी जनरेट की हुई है. And your customer whenever he or she comes to get the product, he should always get it. That is basically what we are looking into the fantastic or what we are looking into the fastest supply chains कि जी आपने आज ऑर्डर किया और आपको कल प्रोडक्ट मिल गया. I was telling you कि जी हमने वहाँ पे अभी स्टार्ट कर दिया हुआ है कि जी now people are using in terms of efficient, पहले ट्रक होते थे, रोड्स के ऊपर रश होता है, सारा कुछ होता है. now they are using drone technology and they call it as the matternet. To transfer goods from one point to another. They are using actually drones. अगर आप देखें तो eBay, Amazon
or there are certain states in USA which have actually using these artifacts as terms of their distribution. So और transport के अंदर वो नई ये technology ले आए हैं. Now why they are using it? Because वो जितना efficient होता है. Now this is not just true for FMCGs. अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी चले जाएं तो गूगल क्या करता है ना, गूगल गिव्स यू कि जी मैंने ये सर्च इतने टाइम में कर दी थी, फास्ट, स्पीड, ठीक है ना. सो यू हैव टू सी कि जी आपने अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को किस टाइम में किस तरीके से अगर आपने देना है, ठीक है. सो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर जैसे कहते हैं रिलायबल, योर कस्टमर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू. बट इफ यू आर नॉट, देन द प्रॉब्लम आकर्स आपके जी उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, दैट कस्टमर्स विल बिकम customers are not going to come to you because your supply chain is totally unreliable. They won't order you because आपकी reliability नहीं है. And remember, in the market the only companies that survive is जिनकी reliability होती है कि जी उन्होंने कह दिया इसका मतलब हो गया. So that is basically the true chip of your supply chain. In the next, we will talk about your operating strategies and your supply chains, which is the last component. Till then, take care of yourself.